Everyone, welcome to its Elemention channel. So today we are going to see about Kent's eighth observation. I have completed all 1 to 7 observation of Kent's which is available on our YouTube channel. Please watch. So now today we are going to see about eighth observation of Kent, which says that some patients prove every remedy they get. What does mean? What it is means? And इसका मतलब क्या है? So, some sensitive patients, instead of getting better, start showing new symptoms of the medicine given. Even if the remedy was correct and given in a small dose. मतलब जब आपने पूरा केस टेकिंग लिया and you got a very similar remedy to that patient which is corresponding towards the patient and the patient has taken, but in the follow up you might see that new symptoms has been happened or occurred in this case. So what this happened? This means their body is too sensitive and they prove of every remedy or every medicine. So after the admission of a dose of a high potency, they will go on proving that medicine, and while under the influence of that medicine, they are not under the influence of anything else. जब भी आपको मेडिसिन देते हैं, जब हायर पोटेंसी दिया है इन पेशेंट में जो वेरी मच सेंसिटिव है, वो हमेशा वो मेडिसिन को प्रूव करेंगे. मीन्स द सिम्टम्स यू आर गेटिंग दैट वुड बी अ मेडिसिनल सिम्टम्स. सो इट टेक्स पोजेशन टू देम एंड एक्ट्स एज अ डिजीज डस. मतलब जो डिजीज के सिम्टम्स थे उसके ऊपर दिस मेडिसिन का सिम्टम एक्ट करेगा एंड ये आपको लगेगा ये इसका डिजीज का पार्ट है. वेर एज यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन द डिजीज का symptoms and medicine का symptoms. The remedy has its own prodromal period, its period of progress and period of decline. In homeopathy we have its the medicine जो भी है उसका एक particular action का time रहता है, progress भी रहता है and proper time of decline भी है. So ये patient में जिनमें ऐसे हमें new symptoms देखने मिलते हैं उनको हम usually बोलते हैं provers. क्यों? दे विल प्रूव द हाइएस्ट पोटेंसी. उनको जो भी मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब करते हैं मे बी इन द आई पोटेंसी इवन इन द 200 और 1 m पोटेंसी, दे विल प्रूव द मेडिसिन. सो ऐसे क्यों होता है? इन्फ्लुएंस ऑफ द मेडिसिन. इन्फ्लुएंस. The patient are inclined to be hysterical, overwrought, oversensitive to all things. The patient is said to have an idiosyncrasy to everything. These oversensitive patients are often incurable. Many of them are born with this sensitivity and they will die with it. They are not capable of rising above this over irritable and overwrought state. So the prognosis is bad. मतलब उन पेशेंट में हमेशा अगर हम कोई भी मेडिसिन दे वो हमेशा प्रूव करते रहेंगे बिकॉज दे माइट बी इडियोसिंक्रेटिक पेशेंट्स. सो सच केस में क्या करना है? व्हाट टू डू? इन अक्यूट केसेस हमेशा याद रखना है हायर पोटेंसी के डोजेस नहीं रिफर करने हैं इवन दो इफ यू फाइंड द केस इज एग्जैक्टली मैचिंग एंड योर पोटेंसी का जो भी चार्ट है यू फॉलो इट इज टेलिंग यू हाई, but still after knowing the case you should always start with 30 potency and इसमें repetition should be infrequent. मतलब बार बार मेडिसिन रिपीट करना नहीं है. In chronic case 30 or 200 it should be start and obviously keep wait and watch looking at the case कि आपको new symptoms मिल रहे हैं or else पुराने symptoms are getting relieved. Note, remember those patient requires infrequent doses obviously, so a doctor must be very cautious in repetition. इसका example हम देखते हैं now. A patient with headache is given belladonna. After the dose, headache goes away, but he suddenly develops new symptoms like dry throat, redness of face, restlessness. These are belladonna proving symptoms. So this is how the Kent's eighth observation says. Hope so you have understood this topic. Thank you for watching.